Hello students, the question is the variation of stopping potential V naught with the frequency nu of the incident radiation for four metals A, B, C and D is shown in the figure. For the same frequency of the incident radiation producing photoelectrons in all metals, the kinetic energy of photoelectrons will be maximum for metal option A, option B, B, option C, C and option D, D. So the problem is based on the topic photoelectricity. And in this particular problem, the graph between the stopping potential and the frequency is given for four different metals. And there are four lines showing metal A, B, C and D respectively. So now we use the formula in this particular problem to solve this problem, that H nu is equal to H nu naught plus kinetic energy. This is the total applied energy, and this energy is used to eject the electron having a certain kinetic energy, and this is the threshold frequency, and this is the energy required to eject the electron, and this is the energy after the photoelectrons they come out. So nu naught for different metals is given here. So this is the nu naught or the threshold frequency. This is known as the threshold frequency. So threshold frequency for metal A, this is the threshold frequency of metal B, this is the threshold frequency of metal C, and this is the threshold frequency of metal D. So we can easily see that these are the threshold frequencies, and we have to maximize the kinetic energy. So we take the kinetic energy in one side and this term in the another side. So we get this equation as H nu minus H nu naught. So kinetic energy is H nu minus H nu naught. Now to maximize this kinetic energy, to make it maximum, this term should be minimum because there is a negative sign in front of it. This term is constant for all the metals. This is the applied energy of the incident radiation, but this term is different because nu naught is different. The threshold frequency is different for different metals. And to maximize this whole value of kinetic energy, we have to minimize it. And to minimize it, we have to take the value of threshold frequency, which is minimum. So the minimum value of the threshold frequency corresponds to metal A. It is clearly seen that V naught for A, metal A, that is the threshold frequency for metal A, is the minimum. So we can say that, easily say that the kinetic energy is maximum. The kinetic energy is maximum for metal A. So we can easily say that option A is correct here. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है जिसमें कहा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है फोर अलग अलग मेटल्स ए बी सी डी के लिए. ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है फोर डिफरेंट लाइंस एक डेफिनेट स्लोप के साथ, जो कि एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रही हैं फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. यानी कि अगर इन चारों मेटल के ऊपर सेम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाला जाए तब उस कंडीशन में इनमें से किस पर्टिकुलर मेटल के लिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. तो उसके लिए इक्वेशन हम यूज़ करेंगे एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई. एच न्यू यहाँ पे एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की. एच न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग टर्म है. ये एक तरीके से एक मिनिमम एनर्जी है जो कि दी जानी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकें. जब इजेक्ट हो जाते हैं तो एनर्जी का जो पार्ट यूटिलाइज करते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी. एक पर्टिकुलर स्पीड से वो जो है बाहर आएंगे. यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है तो हमने एच न्यू नॉट को दूसरी साइड ले जाना है इक्वेशन के. तो इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. यहाँ पे एच न्यू टर्म जो है वो फिक्स है क्योंकि चारों मेटल्स के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, लेकिन जो टर्म वेरिएबल है अलग अलग मेटल्स के लिए वो है न्यू नॉट, जो कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं. तो अगर हम इस ग्राफ को एनालाइज करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल ए के लिए मिनिमम है. तो अगर ये वैल्यू मिनिमम होगी तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है जिसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, यानी मेटल ए के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.